इन लोग ही पूछ रहा था ना बर्थडे बॉय नाम क्या है? यश खुद ही जाएगा स्कूल एग्जाम्स पे काम करना है जस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट माउंटेन्स का पूरा हो गया ना so we will continue with our regular chapters so that when they join education हाँ मान ही गए हम लोग अभी तक मिनरल्स में बात की है मिनरल्स हो गया conventional or non conventional energy that was Topic is the last module. So good. Sir, I got my second grade marks already. You are out of na? No. Then what? 40 to 115. Oh, I can't expect Gargi to. I'm sorry. Both did doing like this. Why not this time out of? Sir, actually, now I lost my marks in giving reasons for agriculture. Why? You didn't study properly. Yeah, I was not clear with the concept of that agriculture. You attended, na? I didn't take the class. No, that's why this one. That's all. But what exactly? Well, is अरे करके पास करो. All good. Don't spread anything here. क्या बोलते हैं ना mystery huffing issues as well. Okay. Put today's date. Write this chapter. Let me teach you quickly and sharply. In that Khargar also have written 2027. 2027? Yes, Why are you 2 years ahead of that? We क्या करें ना? I feel 2027 I should be somewhere at home. ओए my dear, जल्दी sign कर. ये last week you were absent. Present. Sure. What happened? Your face is all swollen. Somebody gave me box. I was sick. I slept for like 3 hours. Sick? I was sick last week. उसके बाद अभी I slept for 3 hours today. Somebody has beaten you on both the cheeks. That's okay. है ना? No. ऐसा लग रहा है. And what's the real story? Tell me then. There's no real story. I slept for 3 hours. Your cover story. Guys, look here. You understand that? So when we talk about the word energy resources, we say very simple. It is that which helps you to complete your work. So as far as no need. What's the name? Now we are going to divide this energy resources into conventional and non-conventional. As the word saying, could you at least, if not tell me the meaning, could you tell me the difference between both? Why this energy resources? In fact, you tell me from the textbook. Conventional में first कौन सा है? 4 लेके देखो. Yes. Second one. Petroleum. Third one natural gas. Just one. That's all. Hydropower. वही तो मैं Hydel, na? Yeah, hydroelectricity. Hydel. Now tell me, looking at this, are they right when they are put under this group? No. Eh? Yes. Conventional. तू बता यार. Sorry. It's okay. Relax. Not good. What will you say? Why coal is under conventional? So because it is used by man for his daily works, and also petroleum is also used. तो फिर non-conventional में क्या है? हफ्ते में एक बार यूज करेंगे तो non-conventional. Bad definition. हाँ. ये भी बीमार है. No, I will not allow you. Why you are late? Close the door. Close the door. Outside being close the door. आगे चिट्ठी बाहर गया. Tell me the correct reason of coming late. Already है. तू भी आ. ना अवे वो already वो खा सकता. Except me, I'm being. अंदाजा कोई नहीं मिलता. इधर बैठ. No, you sit there in the corner. You're comfortable. देखो कैसे सोएगा. सोने दो. Hey, sit down. You were saying the difference between. I know. And then don't know. I don't. Tell me.
Why they are conventional? Simple. Okay. Meantime, tell me the non-conventional. Solar energy. Then Wind conventional. energy. Two by center. Idle, na? Yes. Wind. Wind. Geothermal. And Nuclear. nuclear. Biogas. ये geothermal नहीं है, है. last में है. Yes. Let us have a very good lecture today. Biogas. Now, who can very clearly convince me? हाँ sir, ये conventional है और ये non-conventional है. I feel we are very conventional, very old method. These are better है ना? You are all non-conventional, modern. Look at the outlook and look at the Thasi. Outlook, what do you say that? Look at that. You mean it's outfit? नहीं, outfit क्या बच्चा ही करेगा. That is something related to intellectual. You have intellectual? Yes. What? What? Intellectual क्या है? Non-conventional are those which are recently used, and these non-conventional are generally eco-friendly. You accept? Is there anyone polluting in nature? No. How about this one? Generally, they are polluting in nature. So I have seen those parents who are very strict with their children. This is a conventional. Conventional that is it. मतलब क्यों? हाँ तो वो भी तो नॉन कन्वेंशनल है. वो लीकेज होगा तो, बट बर्निंग में होता है क्या? अभी ये आई एम सेइंग थर्मल और पेट्रोलियम जब बर्न होता है सियॉन आता है ना? मतलब गैस निकलता है. What does it mean? Polluting. Petroleum don't you think it's highly polluting? So गाड़ी में जब पेट्रोल तो बैठ जा विमान तो बैठ इसको दे. But then when it comes to car combustion में देखो अगर आपने कार का कंडीशन प्रॉपर नहीं रखा तो lot of gases. Which gas is the most dangerous? Carbon monoxide. Your chapter will cover what is energy resources, what is conventional and what is non-conventional. I'll explain its formation, advantage, disadvantage. So there are 3 chapters coming in. Actually 2 ही है. एक है conventional है और दूसरा है non-conventional. Give me some new points जिससे मुझे लगता है कि हाँ भाई ये conventional है. Generally these are fossils. Am I correct? Yes. Can I say they are fossils? Solar panels are fossil. That's right. है ना? And generally they are cheaper in the short run only. Long run they become troublesome or costlier. Whereas this one, they are costlier in the short run. अभी मैं मेरे ही बिल्डिंग में जब सोलर पैनल लगाने का बात किया एक फ्लैट को 3-3 लाख रुपए आया. तो मेरा मम्मी ने बोला अपना है मैं दे रहा हूँ. बाकी लोग बोला आप लगाओ हमको नहीं चाहिए. जब बेचारा सोलर वाला आया तो क्या सर एक फ्लैट का मिलेगा तो मेरा खर्चा नहीं निकलेगा. मैंने मेरा फ्लैट लगा. My building is a very short and sweet 24 only. 12 on A, 12 on B. बस. तो मैंने क्या बोला आई एम रेडी टू पे. बट वो सोलर वाला बोलता नहीं सर पूरा 24 फ्लैट्स आएगा तो आई कैन स्टार्ट द वर्क एंड वी. तो सोलर पैनल लेइंग इज अ वेरी troublesome. Have you seen solar especially this tidal and windmill also are trouble. Long one, you know. I'll show you the videos how it is. But long run it becomes cheaper. Why cheaper? Naturally, sir. जब तक sun है, it will absorb all the lights. And when sun sets, the energy produced is transferred. Can you use the solar power during night time? No. No, but that was we can use it, but we cannot store it. We No. cannot store it. Like we can use it if it is stored. We can. Moral of the story, Like, right. we can. I have it in my building. तो उससे ही वो water वगैरह सब हीटर. अरे दिल पे अच्छा बिल्डिंग में क्या मतलब वाटर हीटर है कोई यार इसको बोल रहे Yeah, we have at our village. because it absorbs and during night time automatically it releases that same energy. So that is that. The only problem with solar anybody If there will be no sunlight. maintenance that also after 1 year वो solar cell में बहुत सारा dust और वो पड़ता है. अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए cheap method बना दिया cleaning. Sir, but in rainy days if there is no No problem, it absorbs minimum sunlight ही चाहिए उसको.
अगर आपको लग रहा है कि सन है बट वो लाइट नहीं आ रहा, then also it will absorb. That is the power of that silicon chips which are inside. You know, cashier watches जो आपको solar watches are trying to close that watch in that solar panel ना, फिर भी watch चलता ही रहेगा. आपको लगेगा वो डिस्प्ले जा रहा है, but डिस्प्ले जा रहा है जब हाथ रखा within no second that watch will be that same time. मतलब it is working. So we always believe solar, tidal, wind, nuclear, biogas, and nuclear are perfectly non-conventional. Whereas these are fossils, polluting, है ना? But can we not do away with fossils there? Conventional. Or not allowed. Why can't we do away with fossils? Because industry level electricity can be given only by coal. You know what is your house consumption and mine maximum कितना watts का electricity आता है? 240. चलो 250. Normally 240 है. An average industry which requires electricity will have 1000 watts. You think हमारा घर का 1000 watts का हम उधर दे सकते हैं? Impossible है. 5000 watts, 15000 watts, 50000 watts का electricity. Then which energy is needed? Definitely coal. And India, come and pick it up. So we have four types of coal. One is anthracite. Come on. Wait, don't look into the book. Next. Lignite. And peat. I remember peat. PT. Which is the best quality coal? Sure. Q. Okay, so which is the worst quality coal? E. How? Is absolutely right because it contains 80% of carbon, the best quality coal. Whereas this contains less than 50%. ये तो सिर्फ वो चारकोल जैसे ही burn होता है, वो पूरा क्या धुआं निकलता है. But this is very costly. Whereas India has this only much. As I said, these are fossils. इनका continuity और longevity बहुत मुश्किल है. कब खत्म होगा nobody knows. खत्म हो गया? There is no that. Whereas here, come on sir, चलता रहेगा. I still remember the slogan where many ministers के बोलते हैं. You know what is the slogan? जब तक सूरज चांद रहेगा, dash जो भी minister है उसका नाम रहेगा. I remember I was in my school days, very young child, and Rajiv Gandhi was busted in that blast. तो पूरा लोग एक चला था. मैं एक बार वापस सोचा ये कौन सा स्लोगन है? सूरज जब चांद रहेगा, राजीव गांधी का नाम रहेगा. लो तो मर गया. वो क्या हो गया? नाम लेने में और मरने में क्या है? मतलब वो जब तक जिंदा था तभी लोगों ने स्लोगन माना नहीं. वो बेचारा गया चलो. तो देखो सूरज है. That is solar. But wind, when I teach you this windmill, you will understand how this position, functioning, and that the mills and the blades and the dynamo, even a slow gust of wind is just enough. But the problem is the construction and the cost involved. But then it will give you lifelong. उधर के ब्रांच में मुझे सर अगर हवा ही नहीं है, the windmill blades are so aerodynamic ना एक blade अगर नीचे आता है, the other two blades will automatically move, and they need some limited amount of movement only. ऐसा नहीं कि सर हवा है तो एकदम एवरेज के तक नहीं मूवमेंट है, तभी भी उतना because they have a transistor or dynamo behind which controls the speed. उसको या shift बोलते हैं, वो रहता है. Similarly, even tidal में तो हम दो जगह पर है, especially in Gujarat. It is during the high tide. Windmill को सोच लो अगर मैंने उल्टा करके पानी में डाला. I did not. Yours open cutting. I said windmill. No, I should not look at it. No, I am not. Go behind. So we always believe even tidal is there, but in India we do not have too many. है Gujarat of course में है. Nuclear, you know, India is the fourth largest now. We have Tarapur plant in Maharashtra, which is India का सबसे बड़ा 24 megawatts का कुछ बनाता है. So everywhere we are seeing India is little bit high. Biogas तो आपको मालूम है, अर्बन और वो वेस्ट से बनता है. And nuclear energy, nuclear हाँ वही कुछ एक्स्ट्रा है क्या? Solar, wind, tidal. नहीं गलती नहीं, पर इधर क्यों आया? चलो. Sir, geothermal. That is what I was asking you.
By the time I most, said yes, sir. and I didn't say hear that word yes. What is geothermal? Anybody? The heat of the internal earth through a pipe and it moves into a steam. वो मैं आपको दिखाता हूँ. इंडिया में दो जगह पर है, एक लद्दाख और एक हिमाचल प्रदेश. मणिकरण and प्यूका वैली. And name of the company which is doing that work is, how can tell you? ये अभी जो सामने चल रहा है उसी का प्रोजेक्ट है. What is LND stands for? I knew. Lacue. I forgot because It is Larsen and Toubro. अभी experimental पे है, but definitely India will go ahead. So, with the heading, you know, to write some introductions. I have one question to ask. Yes, ma'am. Why EBS and geography are related? क्यों? No, because thing which is studying geography is also the same thing in the यार EBS. EBS क्या है ना? Many parents are against it. They are saying your portion का addition ये same ही तो है क्यों उसको बार-बार पढ़ा? Now that same topics are किसमें घुस रहे हैं? एक सब्जेक्ट ऐड किया, but उनको मालूम नहीं कि सब्जेक्ट इसी के अंदर है. ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना वो सब ईबीएस में रहता है. I know we have EBS. ना राइट अप. But it's it increases percentage. Let me add your this one. I keep the right up. Conventional एक काम करो आप लोग ऐसे लिखो. कन्वेंशनल के सीओ एन डालो, पॉजिटिव डाल के एल डाल दो. नॉन कन्वेंशनल के नॉन डाल के सीओ एन डाल दो बस. तो नो नीड ऑफ राइटिंग दैट वर्ड्स अगेन. राइट. Are those energy sources? Conventional are those energy sources. I want to write this first. Ask her what does it mean? What? Conventional. Right, I'm giving you. तो कि मैं ऐसा बुझा दे रहा क्या लिखा है? Conventional. I should shift the chair. ये लोग क्या उस दिन बोले थे रख के बोले. अरे यार. वही हाँ, उधर पोजीशन. तुला चालता है ना सही. नहीं राहुल दे राहुल. नहीं चालता. ये मराठी मार्क्स का सच. हाँ गुड मार्क्स. कितना बड़ा जाओ. No. Voice. B for voice is it? Yes. Conventional are those energy resources. हाँ, which are used since long time of the history. Since long time in the history of history, since resources were available in abundance. Since resources were available in abundance. Underline that word abundance. Where is your notebook, my dear? What is this are you doing? Shall I push you sweetly outside the class? Why not? जब उनको लड़कियों को लेकर आता तो बाहर भेजा ना मैंने. Yes. I'm doing favoring to boys and you are. Tell me the reason why did you bring the book? Coming late, not printing हाँ, books. बोल सोचना तो मतलब दूर हो. Very late हुआ था. हाँ. किधर से आया? तो स्कूल तो comes early ना मम्मी. Again I went to clinic today. What happened? डॉक्टर को तबीयत खराब है. School में vomiting हुई थी ना. तो नाजुक है. इसको haunted in the house. हाँ. क्यों ऐसा? You know he fainted at his home. मस्ती भी बहुत करता है ऊपर. Look how she is, but she is very healthy and wealthy. मतलब healthy. तो suddenly when the wealthy, अरे health is wealth. You have some. अगर जिम में करते तो लेके जाओ तो करेगा क्या? I want to come to gym. अभी यहाँ पे घोषण पड़ा ब्रांच है ना? उधर लोग ने वो कोई तो एक्टर किया है. हाँ. तुषार. Oh. No, not Tushar. Aditya Roy Kapoor. Oh. You know him, is it? Yes. What is it? He's like one of my favorites. I know.
नुकसान पड़ा पंपिंग में अपना ब्रांच का एग्जैक्ट और मैं गया भी जाके वो इंक्वायरी वगैरह किया जेनस The तो gym is there now open. आउटसाइड वाला We saw it there. भगवान उसके लिए यू आर हीरो ना मेरे थोड़ा हीरो से नफरत ज्यादा है लेट अस राइट आई वांट टू सी योर नोटबुक Yes, I'll write it. जस्ट आफ्टर मी Just. I'll call her. let me see how you manage it is also continue it is also a dependable source of energy dependable source of energy which help in the energy requirement fulfilled which help in energy requirement fulfilled more efficiently what there was more efficiently first one now directly write coal I'll give very short very sweet तो फटाफट आपको निकल जाए है ना so you need to understand the coal first one Pointers में नहीं होते. Non-conventional. फर्स्ट आगे कन्वेंशनल आता है सेकंड ही नॉन कन्वेंशनल आता है उन्हें पेजेस आगे ही है okay let's proceed coal more of a fossil fuel comes with elaborate supply of energy through thermal power production TPC thermal power production stop second it mainly comprises of shall I go a little bit faster No. Yes. Yes. I was seeing the way you write is very slow. You complete your paper in exam board. It comprises of dead and decayed material. Inside the bracket you write organic and inorganic. Organic and inorganic for millions of years. थोड़ा फास्ट बढ़ो तुम्हारा पेन फास्ट है योर स्लो है अच्छा for millions of years next there are आप ये कॉपी करो 4 main types एक ही लैंग्वेज you need to write it there are 4 main types hey, everyone has a textbook na Yes. why don't we mark anymore is it Very anthracite bituminous lignite and peat chalo I have souls mercy and department words now the rest we will do it from our volume okay Volume. the textbook give me a pen no I say just keep reading or I'll take your okay speak चलो
Page number 143. Everyone is having? Yes. I'm reading and we move on. So anthracite, open bracket. Hardest and highest among different varieties. Shiny, lustrous, jet black, almost jet black. Carbon content only underline karo and 90% burns. Burn slowly without smoke. Who can explain this? What does this burn slowly without smoke means? Means a kilo of anthracite can burn for 3 to 4 hours without any problem. If I get the same kilo of peat, it will burn half an hour or 1 hour. मतलब क्या है? इसके पास carbon content ज़्यादा है. Have you seen coal literally? Yes. Where? In village. ओए वो चारकोल होता है. Village में कौन कोल से खाना बनाता है? And coal is mainly for industry and घर में नहीं. It will blast. It's dangerous. Highly more like a stone. आप ये रेलवे वैगन्स को देखो. पहले वो ओपन रहता था and वो लेके जाता था. अभी नहीं. अभी तो गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है. बहुत सारा कुछ ट्रेन में बहुत सारा वो थेफ्ट होता है. So normally coal is exactly like a stone. It's not stone, but it is as a hard as stone. So anthracite का good thing क्या है? It can burn for hours. It will burn slowly. मतलब उसका intensity नहीं. It can withstand the fire, and it can give 0 or less smoke. That's good thing about anthracite. Let's come here. देखो. For a long time, leaves very little ash. What is ash here? End product. Remains. Smoke substance है ना. Underline high calorific value. किसका physics बहुत अच्छा है? अभी हमें है नहीं कैलोरी में. है 10th में है. और जब भी आएगा आपका टीचर से पूछना. बाद में है ना बट. सबसे एंड वाला था. जो हुआ है उसमें से पूछूं. हाँ. It is globally preferred. Underline that word globally for domestic purposes. यानी normally ये cold countries है ना, वहाँ इसको लोग use करते हैं. For mainly for heating purposes. अभी तो मैं जितना भी घर उधर देखा ना इलेक्ट्रिक वाला हीटर है. But कुछ लोग ब्रिटिशर्स लोग आज भी उनको पुराना टाइप चाहिए था. लोग अंदर हाथ नहीं लगाते. वो कुछ स्टेज से they keep on bundling. तो उधर ये coal use होगा. क्यों? It can burn for hours and hours and no smoke. So it can give heating. समझ में आ रहा है? चलो. सर वो हीटर में रहता है फिर वो क्या? वो हीटर तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से बनता है. बॉयलर रहता है इतना बड़ा 6 या 7 फुट का. ये बैठ के बनानी ना सके थे बस. हीटर है? हाँ. Open bracket. Bituminous, hard, black, compact, almost 80%, almost man. And world's total coal output में 80% कौन सा coal मिलता है पूरा दुनिया में? Bituminous. So which is a rare variety? Anthracite, which is largely found bituminous. Out of the total coal that we extract, and bituminous is 80%. And India में भी है बहुत है. It varies composition छोड़ हाँ composition आ जाओ carbon 50 to 80. Underline that word. Steam coal with a carbon content. Now tell me ये steam coal है तो कहाँ use हुआ रहेगा? Let me see. Steam. Tell me locomotives. That doesn't know locomotives. हाँ doesn't know भी है. हाँ but use तो किया ना but क्या है वो तो बता. Steam engine. मैं बोला था steam engine. Right. Who invented the steam engine? James Watt. That is why it is called a James Watt steam engine. And पहले बार जो steam engine बना ना, that was for industry in London. Then they used the same steam engine to use the piston and the wheel. तो रोज आता था. अभी मेरे पापा तो अभी नहीं रहे. He used to tell me from Chennai to Mumbai, he will be traveling for more than 4 weeks. बोलता था ट्रेन इतना स्पीड से चलता था कभी भी लोग उतर जाते थे कभी चल रहा था. स्टीम वाला 15-20 दिन लगेगा और जब रुक जाता था
उसे 3-3 घंटा लगता था कोल डाल के उसको गर्म करके फिर स्टीम वो विसल देगा ये लोग चढ़ के बैठते मैं कहाँ बैठते थे मैं तो हमेशा ऊपर ही बैठता था तो डर नहीं लगता था ट्रेन का स्पीड ही कितना लगता था he was 2 a.m. when he came to Bombay he said this steam engine was a real miracle why because people started moving from one corner of the country to the another corner okay so underlying fine carbon content varying 50 to 80 widest utilization for domestic and it is easily available coking coal only चाहिए okay come to lignite it is also known as brown coal अब ये दोनों कोल कौन सा था ब्लैक ये अकेला ब्राउन हाँ लो ग्रेड कोल अंडरलाइन कर लो only 40% इंडिया में एक ही जगह पर है प्लांट इसका तमिलनाडु में लीगल carbon contain good deal of moisture and less combustion. अब if it has more moisture, what is the problem? तो पहला moisture दूर करने के लिए आधा घंटा लग जाए, तब जाके वो आग लगेगी. So normally these coals are those I remember going to some South Indian family, ये कोल को लोग सन में डाल के रखते हैं, क्योंकि वो सन का जो लाइट लगेगा ना, उसका जो हाँ moisture निकल जाता है. Now peat. Underline. It represents the first stage of transformation of food into coal. ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था. Write a note on the first stage of transformation of food to coal. कौन सा कोल है? Peat. Right. What is the meaning of this sentence? अच्छा जब पहले बार मैन को मालूम पड़ा कि कोल करके कोई सब्सटेंस था, they found only peat first. समझ में आ रहा है? मतलब एंथ्रासाइट तो मेरे ख्याल से बहुत लास्ट बना रहेगा. ये सबसे बेस में था फिर मे भी आगे जाके हमें लिग्नाइट बना रहेगा फिर आगे जाके बिटुमिनस बना रहेगा आगे जाके एंथ्रासाइट सो दिस इज द बेस व्हेन यू एंड मी केम टू नो व्हाट इज कोल वी हैव टच्ड अपॉन व्हिच कोल फर्स्ट ऐसा नहीं कि पहले हमको एंथ्रासाइट मिला एंथ्रासाइट माइट बी द प्योरेस्ट वन सबसे लोएस्ट वन कौन सा था दैट इज द मीनिंग सो विल यू एबल टू राइट द आंसर वो देख लो it is an accumulation of vegetable matter undergoing varying degrees of decomposition and carbonization. I am giving time since I am running through. Please read it because the whole item was important. And ask many queries. Why it is important out of the bag it is? Huh? I'm scoring my bag. Every girl says the same. Even I got that other girl, I was calling them. More seriously, I don't know what the other word. You are not the other girl, then who is the first girl? Chalo. CBSE students are good, kya? You All like students are good. So what is the question of liking and disliking? देखो, if I like a student, na, he or she will get a good inspect. Like yeah, this girl. Since 9. Seriously. You are also good. He is also good. He is also. In fact, they are very good. Huh? Then they should not But tell I have you. noticed like notes which you gave in the class are very useful. 9th standard, sir. Yeah, 9th standard. Oh, not 10th में used to do that. 10th में 10th में भी है, पर 9th का experience बता दूँ. And in finals, I just recited and just done your notes and went to exam. I got 79 on You should get a special shot. Sir, now we are at your exam and I promise that I should reach at least 65. At least. मुझे लग रहा है 65 is nothing. In But 10th at for least first, read. in 10th for first year, I got 49 on 50. She will make me laugh. हमारे डैड ने फिजिक्स में पेपर फाइल है तो अरे हमारे ऐसा कुछ नहीं. देख एक मैं बात बोलूं. दुनिया का कोई भी कोने में जाने दे. अगर if you have written the things what I expect or what the you get it. हाँ, listen until some continuous examination they know how. चलो जल्दी करो. What is carbonization? What's up here? Carbonization. The process of the coal and addition of the carbon inside its chemical constituent is called carbonization. What is ionization? Same like this. It's chemistry. India is just backing us to this.
ये मिस्टर जडेजा गिरा ना फिर लोग तो खुश होना बोले लोगों को उधर ही आना लॉट में खेलते हैं ना अच्छा खासा मैच में एक पागलों की तरह एक तकलीफ and my near and dear family members are in London तो रुको थोड़ा मैं शिफ्टिंग है शिफ्ट no मतलब जहाँ go after my 10th, after I pass out from uni. Oh, how can you hold me with that? The flight gets ready or the flight Just go there. मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले उठा अरे speak in English British Airways अब where are you going here देखो there are I'll complete my DTA but I cannot meet up But I like just to get it. अभी खत्म हो जाएगा हाँ and अक्टूबर से तो आपका रिविजन स्टार्ट होगा है ना और क्या तो मैं है कि नहीं आई एम आउट ऑफ पिक्चर आई कंप्लीट ऑल रिविजन डन देखते हैं कोई ठीक है मम्मी की तरह रेस्टोरेंट क्या सर्दी होता रहता तुझे इसको भी तूने बांटा लगता है नहीं आया ही नहीं था ये सीजन ही ऐसे है बच्चों लोग भी है ना यू शुड नॉट ड्रिंक इवन इफ इट इज आई डोंट नो व्हाट प्योरीफायर यू आर हमारे घर में तो अभी भी जीरा वाटर ही आती है साउथ इंडियंस के लोग बंद बॉईल करेगा और मेरी मम्मी वो करेगी तो ये भी जड़ी बूटी पानी चालू Some other right I don't know vegetarian yeah also. अच्छा ये बच्ची खाने का काम अब एलर्जी ज्यादा है what are the other things I have my neighbor serving there. wafer कैसा They are my guru. oh they are absolutely Yeah, guru. अच्छा देखो one thing you should do ना while you check with the doctor and ask them if allergy is due to certain age factor फिर बाद में देखो तो नॉर्मल आजकल वो मिल्क क्या है वो सीरियल में देखा प्रोस्टैटिक मिल्क Yeah, full. नहीं वो जो नॉर्मल मिल्क है वो बच्चे पिएंगे तो बीमार पड़ते हैं बीमारी उनके लिए स्पेशल मिल्क आता है जिसमें कुछ तो नहीं रहता I eat मतलब you don't like there are certain children they cannot drink the normal milk many doctors even this doctor lactose intolerant. what is that lactose Intolerant. what is that They can't consume milk or but they have some special milk which is only for those yes, patients soy milk or some. It is so bad. So I can't drink directly to it, but I get in all the milk products. I love all the milk. you get married to a medical है ना Yeah. ooh you ready No, I'm not. I don't want to marry. okay वही लोग लाइन में है ना पहले बेटी चलिए निकालो Yeah. अरे टेक्स्ट बुक है ऑलरेडी है तो चलिए हाँ देखो while they ask the question ना one thing I forgot they'll ask you two age or types of coal based on their formation one is Gondwana coal field repeat after me next tertiary coal field tell me Tertiary coal. this is simple 200 million years old है ना and this is of recent origin only 55 million years Only. हाँ and what is good thing about this is 98% this is only 2% so if you remember that story when I narrate Gondwana field and that what is that other Angara and Gondwana that belongs to this age so this the deepest this at a little bit understood ये नया बना है और ये दुनिया का oldest field में आता है तो naturally this should be 98% why this cannot be 98% sir 55 million जो भी है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं based on their age this is 200 this is 55 got it चलो अभी आएगा distribution देखो in India coal occurs rocky sequences two geological ages देखो उधर दिया है Gondwana 200 million tertiary only 55 million
India does not have underline extensive deposit. High grade 90% carbon India के पास नहीं है. That is answer right. Whereas the Gondwana field that is mainly bituminous India में है. 50 to 80% India में available. Is it okay? I'm taking you to Gondwana. 98% of the total reserves, almost free from moisture, contains sulfur and phosphorus. It is mined from open bracket here. Sorry, deep collieries and is used in steel plants. I think this is the mining area of the what do you call it? Coal. Next, they are largely confined to river valleys. Any two याद रखना, Mahanadi, Godavari and Damodar. The major resources are in Gondwana in the state of open bracket. Then Bengal, Jharkhand, and Odisha, Chhattisgarh. Come to tertiary. Compared to Gondwana, that has higher moisture content. Now, which coal has a lower moisture content? Gondwana. Which has a higher moisture content? So, which is best for our use? Now, any reason, scientific reason? क्यों इसमें ज़्यादा है और उसमें कम moisture? हाँ, evaporation or that heat has not taken the moisture from here, whereas these are very old. So they are a complete formed coal. Can I say these are partial? अभी आपके दोस्तों में कुछ दोस्तों ऐसा रहेगा, आप लोग बोलते हैं ना ये हाफ क्रैक है, नहीं सर वो पूरा ही था सर, अभी थोड़ा बेटर हुआ है. कुछ भी आके बीच में बोलता है माफ कर. Don't even think कि किधर क्या बोलना है, तो सोच लो ये वैसा टाइप कैरेक्टर है. और ये पका हुआ चावल है सर, पका हुआ चावल कौन है? हर चीज सोचता है, समझता है, तो बोलता नहीं, निकल जाता है. Like yesterday, my sister came in to meet me. So she was saying, "I just pray that Mr. Modi is there for next 5 years, but he's getting old now. He's 79 or something like that." And I'm like, "Tension na le, with his health and yoga and other things, I feel that next 5 साल भी वो आराम से बैठ सकता है. After that, the age might come into factor, and automatically he will remove himself from politics. Why? Because now what India is, है ना, which no other country in the world can defeat. When America is very curious, कौन सा इन लोग कौन सा innovation बनाता है, जब से हम लोग ने पाकिस्तान को हिट क्या किया, अभी weapons का भंडार लगा है, and पाकिस्तान को छोड़ दो, even America is thinking इन लोग ने इतना sharp pinpoint attack कैसे किया. Why I'm saying? Because the development of India, Indian industries, defense, everything is at a high level, and why not our students? अभी जो यूक्रेन और ईरान का जो war declare हो ना, ईरान में भी there were thousands and thousands of students studying. Israel में हमारे students हैं, and you know he has gone to all these African nations, Namibia, what is that, Trinidad and Tobago. ये nations अब कभी कोई minister गया नहीं. He is the first person to go. Very small nations, but they have lot of RE minerals, rare earths, जो China हमको नहीं दे रहा. So he is thinking for the next 15 years, 25 years, or 30 years. But I doubt Mr. Modi will be alive at that time. But then, planning for a bike. If I tell you simple, if you have visited a country called Singapore, it is the only country in the world which doesn't have any resources. पीने का पानी भी उनके पास नहीं है. वो लोग ने मलेशिया से कॉन्ट्रैक्ट किया है 20, I think 35, if I'm not so wrong. But every day they get rain. So what this country has done, collected the water, rain water in such beautiful way कि इसका खुद का पानी 2060 तक जा सकता है. But वो agreement है तो पानी वहाँ से. Vegetables, non-veg, fruits, everything comes from foreign. मतलब production in Singapore is zero. Even you see lovely cars, I've seen this Maserati and high quality cars, all are there, but not manufacturing. But hey, what does it mean? Such planning is done to that country. That country is only 1 hour 35 minutes. उसको country भी नहीं बोल सकता. आप अगर मैप में देखिएगा ना, मलेशिया के बाजू में एक रेड डॉट डाल दो, that is that country. When that Lee Kuan Yew, the father of that nation, took away Singapore from Malaysia, it was only people cutting sugar cane. उसका पुराना पिक्चर देखिएगा तो बोलेगा धारावी से भी घटिया है. 53 years में वो कहाँ पहुँचाया? Nobody can track. He was the leader. मुझे याद है when he had his last brief, I could feel every day तो rainfall होता, but that day it was hundreds and other
By the time I reached my home, they said he is no more. You know what the will says? Not a single photograph, not a single statue of that person. And the small house where he lived in, that also was demolished. उसका will वही था कि मेरा नाम निशान किधर भी नहीं रहेगा. That was his greatness. मतलब जिसने सिंगापुर को सिर्फ शुगर केन फार्मलैंड से इतना बड़ा पहुंचाया, he doesn't want to people remember him. इंडिया में देखो है ना, हर गली में उसका नाम का एक सलून से लेके पता नहीं क्या ही लोग खोल देते हैं. That is our thing. So I always believe planning should be done. Without planning, even your life, maybe like your 10th, 11th, and 12th is definitely in the hands of your parents. But उसके आगे तो you are well. अब सोचो कि अगर 11th 12th साइंस है तो मैं आगे क्या करें? क्या ये है? Defense related है? You become a aeronautical engineer. What else? Oh my God! What a job and what a lucrative, yeah. And you will be having a name with a emblem. Ashoka, sir, government का पापा मेरा नाम क्या है? और क्या चाहिए भाई? Until you die, you will get a pension. That also from the government of India. जैसा कि मेरा मम्मी को मिलता है. After that, after my father, my mother gets 75% of the pension. What does it mean? That is serving a central government. So आज है ना इंडिया ये जितना भी मैं सोर्सेस बताऊंगा, India is too good with it. But इंडिया क्या करता है? Right time पर right opportunity पर बताता है कि मेरे पास है. Now you know there is an underground train. It will take 3 hours, not even 3 hours, 2.5 hours. Bombay to, sorry, not Bombay, Delhi to Dubai. हो गया almost. Very soon they'll open it. Delhi 2 to 3 hours. हाँ, fast moving trains are. It's just like an airport. और क्या है? हाँ, और क्या है? And India और भी बहुत काम कर रहा है. I think by the time I perish, I don't know. But you guys will be young and you know, FT. That time will see you. Always you work with the such a way, यार. सच बोल रहा है. India is doing tremendous work. We are bringing foreign university. हो मालूम है? Our own Fadnavis has brought 2 university. अभी I think next year खुल जाएगा. नवी मुंबई में ही खुल रहा है. मुंबई में खुल रहा है. Yeah. Foreign universities are coming and opening their. Which are. But है मेरे पास details. तो मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आप 50 लाख 40 लाख आप अभी उड़वे में जाओ, वही यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इधर खोल. और क्या चाहिए? और 2 साल 3 साल मेरा बच्चा मेरे से दूर रहे, छोड़ इधर ही है उड़वे में. आपकी सारे बात. I am working man. So there you go. थोड़ा सा है मैं बता दूं. बच्चों ये बात. चली? Yes. Tertiary coalfields are found in open bracket. Assam, AP, Meghalaya, Nagaland, and Kashmir. और हाँ देखो तमिलनाडु दिख रहा है, गुजरात और ये नेवेली को तमिलनाडु को एक एरो मार्क से कनेक्ट करो. इंडिया में एक चौथा साउथ में एक ही कोलफील्ड है नेवेली में जो ये निकालता है बिटुमेंस. These are largest circle that वो क्या है ना नॉर्थ में रह के है फिर इधर आने का नहीं सोर्स ऑफ इनकम आई थी. कम नहीं है ठीक है अरे अच्छा है. Coal is used as underline power for running machines, trains, ships, and dynamos. I hope you understand dynamos, everyone. Okay. Coal is used for manufacturing of iron and steel, like direct heat and energy, and used as raw material in thermal. Disadvantage underline calorific value in India is low. Kiska coal tha India ka. Coal reserves are underlined scattered in small amounts. Production and transportation is quite high. Limited reserves and large scale pollution. Only advantage and disadvantage are notebook में फटाफट. While you write, you remember only that word. No need to write the full sentence also. And coal is very important. इनका एग्जाम में नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा एग्जाम. Next week में 2 weeks बाद. नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आएंगे और वो जब आएंगे तब हम लोग आएंगे. क्योंकि हमारी और उनकी 40 मार्क्स होंगी. 80 मार्क्स के. Did I cover all the chapters? Yes. Any 1 or 2 chapters that please tell me. 80 तो I should give you some revision वो भी बोलो. I'm ready for it. ये आप लोग का कोऑर्डिनेटर को बोलो दिला दे one sweet class to
Only advantage and disadvantage. While writing, you will learn. Put the next again if you're written on that. Next is what mental oil is there. Petroleum. Petroleum only. This one is also. इसके नीचे वाला. ये only I have to say. English. Chemistry. I think English. Yeah, guys, put the next heading. What is that? Petroleum. Petroleum. This is how do these people are allowed into YouTube? I don't understand. I think वो हिंदी वाला वो better है. Actually, we understand. Oh my God, we'll learn about it. What is the goal one? Wait. I found this one. No, it's this one. This one.
प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो ये अर्थ क्रस्ट के नीचे हो जाते हैं। इन डेड प्लांट्स को वुड कहा जाता है। याद रखें कि जब ये वुड जमीन के नीचे दफन हो जाती है तो यहाँ पर जमीन के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वुड सबसे पहले पीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जमीन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये पीट मिलियन ऑफ एयर गुजरने पर हमारे पास कोल फॉर्मेशन करता है। कार्बन कंटेंट की बेसिस पर कोल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ कोल हमारे पास पीट कहलाता है, सेकंड टाइप ऑफ कोल लिग्नाइट, थर्ड टाइप ऑफ कोल बिटुमिनस, और जबकि फोर्थ टाइप ऑफ कोल को एंथ्रासाइट कहा जाता है। कार्बन कंटेंट की बेसिस पर कोल को इन 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यही वजह है कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास कार्बन कंटेंट इस कोल में इंक्रीज होता जाता है, यानी कि सबसे कम कार्बन का कंटेंट हमारे पास पीट में है, इससे बढ़ते हुए लिग्नाइट में ज्यादा है, इससे ज्यादा परसेंटेज कार्बन की बिटुमिनस में, और सबसे हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट हमारे पास एंथ्रासाइट में मौजूद है। सो 4 स्टेजेस हैं जिससे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कोल फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब डेड प्लांट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट बरीड हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास ये डेड प्लांट जिसे वुड कहा जाता है ये पीट में कन्वर्ट होता है, यानी फर्स्ट स्टेज जो होता है कोल फॉर्मेशन का इसे पीट कहा जाता है। याद रखें कि यहाँ पर कार्बन कॉन्टेंट सबसे कम होता है, जबकि हमारे पास वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर कॉन्टेंट सबसे ज्यादा पीट में मौजूद होता है। पीट जो सेकंड फॉर्म ऑफ कोल में कन्वर्ट होता है इसे लिग्नाइट कहा जाता है, जिसमें कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू पीट ज्यादा होता है, जबकि वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर कंटेंट एज कंपेयर टू पीट कम होता है। लिग्नाइट जिस थर्ड फॉर्म ऑफ कोल में कन्वर्ट होता है इसे बिटुमिनस कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन कंटेंट लिग्नाइट के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, जबकि मॉइस्चर कंटेंट और वॉलेटाइल मैटर कम होता है। चलो थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लो, नीचे देखो। राइट डाउन फॉर पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम नेक्स्ट नहीं करना। हाँ, नेक्स्ट important to coal, next important to coal, petroleum is the most important conventional resource. Conventional resource. Second point, mainly found in underground reservoirs, mainly found in underground reservoirs of sedimentary rocks like that of sandstone, limestone, and shale. Shale, ऐसे shale, वो भी एक टाइप का sedimentary rock है. Next, on the last point, petroleum on its extraction and purification leads to the extraction of kerosene. पहले लिखो diesel, sorry. Extraction of diesel, kerosene, lubricants, LPG, and paraffin wax. Thank you. I'll see you next time. Try to do the advantage and disadvantage of this. बाकी तो मैं दे दूंगा.